Indigenization remains one of our main focus in the times to come, and indigenized equipment becomes our mainstay in the future. In the last year, we continue to induct and promote indigenous development of our fleets, be it in aircraft, radar, missiles, and other aviation equipment, to go towards self-reliance and reduce dependency on foreign equipment. A few amongst these are the light combat aircraft. For the 83 aircraft, we are about to close the CMC. Additional Akash systems which have been cleared. Advanced light helicopter, Mark 4, light combat helicopter, Arudra medium power radar, AAAWR, Astra, which was recently, you have seen the success of this air-to-air missile, and the BrahMos missiles. The IM has already received 16 IOC SCA, and FOC for the SCA has already been granted. The FOC delivery will start in about 4 to 5 months. We have also inducted and operationalized the Airborne Early Warning and Control, the AEWNC, which has been extremely successful in its operationalization. The induction of ALH, Akash, SAGW, IACCS and Air Defense Radar are some of the other success stories of the indigenous effort that has been underway. With its latest induction, the IF is further bolstering its strength. The acquisition of Rafale aircraft and the S-400 missile system will greatly enhance our operational capability in the times to come. The induction of potent Apache attack helicopter fleet, which has already started, and Chinook heavy lift helicopter, which has added a punch to our capabilities in these fields. Notwithstanding the pace of acquisitions, modernization and indigenization efforts, which is an ongoing process, the IF is prepared to fight at short notice in full synergy with the other two services. IFL service has evolved considerably over the years with the capability of sustaining operation readiness for a prolonged period, some of which we demonstrated during Gagan Shakti. I have continued to respond to the clarion call of duty to civil authorities towards humanitarian assistance and disaster relief in a swift and timely manner. We were always the first to respond. Our brave air warriors continue to provide aid and respite to our countrymen in times of need and demonstrated exceptional courage and selflessness in the face of most hostile and adverse conditions during such operations. In the last 1 year, I have been actively involved in providing rescue and relief to cyclone and flood affected areas of Odisha, Gujarat, Maharashtra, Kerala and Karnataka. The IF provided timely assistance in fighting and dousing fires in Bandipura, Palakkad and in many such places. We rescued stranded civilians and provided relief materials in Chamba, Buntal area of Himachal Pradesh, which was cut off due to heavy snowfall. IF transport aircraft were also pressed into service for airlifting students from JNK for GATE exam in Feb this year. In addition to HADR operations, we have been participating in and conducting regular multilateral and bilateral exercises with various nations, and the progress of our force is evident. And most of that you have seen on the video, so we will not go into the number of exercises that we did recently. However, the exercises that are slated in future I will touch upon, which are exercise Eastern Bridge 5 with RAPO in October, GMT 19 joint exercise with Singapore Air Force, which will be held in November 19. Indra 19, the second edition, is planned in Jan 2020. Exercise Indradhanush 5 joint exercise with UK Royal Air Force in Feb of 2020. And these exercises provide us with substantial operational experience and exposure on the aircraft capabilities of the respective air forces that we exercise with, and facilitate mutual exchange of ideas, mission planning and execution in a simulated high-threat environment, and we get to know where they are in the world today. The loss of an aircraft during peacetime is a cause of concern and a cause of worry, though we have always taken precautions that this doesn't happen. We are making concerted efforts to minimize them
and preserve our assets, and this will be a priority area. We have inducted state-of-the-art flight simulators already for training the aircrew and exposing them to realistic operational environment without endangering flight safety. To ensure a safe flight environment, we have taken measures to reduce bird strikes. Though the machine is important, the true strength of any organization lies with its personnel behind the machine. The men and women under my command are confident to take on any threat and are fully prepared to undertake full spectrum of air operations and respond to any challenge in the most befitting manner. Post the announcement by the Honorable Prime Minister on 15th August 18, the IAF rapidly formulated requisite policies that enabled consideration of women officers for the grant of permanent commission across all branches. The gender neutrality of IAF policies has resulted in a woman officer taking over as flight commander of a helicopter squadron, and one of the lady officers is already posted in a diplomatic assignment in Moscow. In the last 1 year, our air warriors have scaled greater heights of success in the field of sports as well as adventure. The performance displayed by our young air warriors in various sporting events in India and abroad were commendable. The performance displayed by our young air warriors in the various sporting events such as athletics, boxing, shooting, wrestling, cycling, cricket, etc. in India and abroad was really excellent. The nation as a whole and the Indian Air Force in particular is proud of their achievements. The indigenous human spaceflight program under the Indian Space and Research Organization is progressing as planned, and our Indian Institute of Aviation Medicine, the IAM, is the nodal agency for all aeromedical aspects, and they are currently involved in selection of the astronauts. It is widely involved in the screening, selection process, initial training, and pre-flight, post-flight health management and safety aspects of our would-be juggernauts. The welfare and well-being of our personnel and their families is of utmost importance. I have been committed to improve the quality of life and enhance productivity of our workplaces. Creation and upgradation of infrastructure for sports and games, living accommodation, shopping complexes, schools and auditoriums to enhance the quality of life and और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, ये जो एयर स्ट्राइक बालाकोट की हुई, ये उस पर वीडियो है। एक तरह से कितनी हमारी सरकार, हमारी वायुसेना पूरी तरह से तैयार है हर खतरे से निपटने के लिए, एक स्ट्रांग मैसेज पाकिस्तान को देने की कोशिश की है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप देखें कि जिस तरीके से लगातार भारत पाकिस्तान को ये दर्शाता रहा है, समझाता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से सुधर जाए, अपने वहां से आतंकियों को पनाह देना बंद करे, आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेजकर यहां पर जो खून खराबा मचाता है उसे बंद करे। मगर जब नहीं समझा तो भारत के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचता था। पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद जो है एयर स्ट्राइक करना भी इसलिए जरूरी हो गया कि पुलवामा जैसे हमले पाकिस्तान में बैठ के प्लान करते थे और उसके बाद यहां पर उनको अंजाम दिया जाता था। और उसी का जो है उसी वजह से जब एयर स्ट्राइक की गई और बालाकोट में जाकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया, तो एक साफ मैसेज था कि इस बार तो सिर्फ आतंकी ठिकाने हैं और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता तो भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स किसी भी चीज के लिए कम नहीं है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर उनके जो आतंकी हैं उनके ठिकानों को निशाना बना सकती हैं तो और कुछ भी कर सकती है। और यही आज भी एक बताया जा रहा है एयरफोर्स की तरफ से कि किसी भी तरीके से जब हालात अगर पाकिस्तान ने ऐसे बनाने की कोशिश की, जो लगभग जो इनपुट भी मिल रहे हैं, क्योंकि दफा 370 हटने के बाद पाकिस्तान में जो बौखलाहट है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो गीदड़ बप्तियां देते हैं, पाकिस्तान के मंत्री जो बोलते हैं, पाकिस्तानी सेना के लोग जो कर रहे हैं उससे तो ये एयर स्ट्राइक का वीडियो नहीं, एयर स्ट्राइक पर वीडियो है, लेकिन मैसेज और संदेश बहुत ज्यादा क्लियर है कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गुस्ताखी हुई तो उसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये किस तरह से आगे की प्रिपेयर्डनेस है हमारी सुरक्षा एजेंसियों की, हमारी डिफेंस फोर्सेस की, ये वो दर्शाता है। यहीं से शुरू हुई बालाकोट हवाई हमले की योजना।
के पास आतंकियों के वर्षों से बन रहे ट्रेनिंग कैंप को चंद मिनटों में नेस्ता नाबूद कर दिया। इस तरह भारतीय वायुसेना के योद्धाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सपूतों के बलिदान का बदला लिया। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने हवाई हमले का एक व्यर्थ प्रयास किया, लेकिन सदैव सतर्क हमारे नव प्रहरियों ने दुश्मन को भारत की आकाशीय सीमा में घुसने से पहले ही खदेड़ कर बाहर कर दिया। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, उस पर एक वीडियो जारी किया है। आपको बता दें, अपने वीडियो में एयरफोर्स ने न सिर्फ हमले के कुछ अंश दिखाए हैं, बल्कि हमले की तैयारी की तस्वीरें भी जनता के सामने पेश की हैं। आपको यह भी बता दें कि कई स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल डिटेल्स होती हैं ऐसे ऑपरेशंस के अंदर जो लोगों के साथ साझा नहीं की जा सकती, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी की पूरी प्लानिंग किस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की हुई और किस तरह से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के मुंह पर तमाचे की तरह मारा गया, पुलवामा का बदला लिया गया, ये एक तरह से संदेश देने की भी कोशिश की है और आगे की तैयारी किस तरह है हमारी डिफेंस फोर्सेस की, वो बताने की भी कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।